The idea is very important, and most important than idea is the implementation of the idea. Yeah. Now, I think the biggest room in this world is room for improvement. So there is always a scope. When I said believing in yourself, it's not an easy process. It sounds easy said than done because it's only you who know your limitations most. So getting up in the morning and knowing all the weaknesses that you have, and then still kind of convincing yourself, you know what, I'll rock it, I'll sustain, I'll survive, I'll fight, you know, I'll come. जर्नी को enjoy करते हैं ना, I'm बहुत blessed हूँ मैं, और मेरी पूरी टीम, I'm sure उसमें कोई दो राह नहीं है. आशीष का mentorship जो है, it's beyond, like, you know, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा. Hello everyone, welcome back to the Leadership Lounge with the CEO magazine. Today we have the pleasure of speaking with Sabyasachi Majumdar, known to many as Sam. He is the founder and CEO of CLOUDIT Automation and Accounting Services. With over 20 years in the accounting industry, Sam has dedicated his career to building innovative and scalable solutions for back office processes. His journey has taken him through some of the biggest names in the field, focusing on everything from tax compliance to advanced financial processes, ultimately leading to the creation of CLOUDIT. Welcome, Sam. It's great to have you with us today. How have you been? Thank you, Shweta. Thank you very much. First of all, thank you and the CEO's Magazine team, entire team, for having me and CLOUDIT for this podcast. Yes, being up to Diwali is fantastic. Having spent some time with family and friends. So I hope you're doing great. Yes, I am. Thank you for asking. So the very first thing that I would like to start is with your professional journey. So you worked as a professional accountant and worked with some of the very big firm at the very initial stage of your career. So how was it like? Nostalgic. I think, I don't know, like how relevant is it now actually going through it's almost like 22 plus years now, back in 2003. You know, Shweta, I've been like a chartered accountant by accident, honestly speaking. My family wanted me to be engineer because they're more of, science background. So I took this profession. A lot of things, you don't know why it's happening because it only, when you cross path, you join the dots. So started with, me pursuing accountancy as my career and, those studies and time put together, and then actually starting my first job, landing up into, IBM, and I was posted in Gurgaon. I belong from Ranchi, and so the journey has been incredible because honestly, I didn't wish for anything where I am today. I think I'm a lot to go. I'm not at all achieved in terms of the inspiration that I look forward to. But honestly, I never wished anything of this sort also. I just started like any young nervous boy would do. I'm still nervous today. Why should I, lie? So it started from there. And thereafter, I was kind of about 7-8 years in the US. Things changed. I changed jobs. I got some amazing platforms and companies and mentors. I think one thing very important is being lucky, as education learning is so continuous. It's just not what you do on academically and then you stop. I think we're really being lucky to have great mentors. So I worked with some great professional, great companies, and it have been a fabulous journey throughout. So I started with IBM. I then went down working with Intuit. We were working in the projects of QuickBooks, support QuickBooks Online, programming that the technical workflow scheduling side. I worked with firms like Thomson Donovan PLCs, which few top
25, 360. There is a legal and community for which a lot of tough firms belongs there. And I had worked to a few of them. Plus, I worked with Erinatius, which is the number one real estate service management company in Europe. So it's been, and then before I started Cloud IT, I was vice president of operations with LP North America, which is the accounting house, and that's been a journey. Yeah. So making the jump from a steady career to founding your own venture, it is not an easy one to make. So, what motivated you to take the leap and launch Cloud IT? Honestly, I think it is genuinely not easy for anybody because I talked to a lot of my friends who are more capable and doing it, but they just think was it is good enough to jump into this unknown world because I've been into the job. Our family has nobody has entrepreneurship experience, Okay. and I don't think anybody said yes to me when I thought of planning this. But once I did, there was a lot of support from family, from my spouse. She said, "Okay, go ahead." And one biggest motivation was um, my co-founder partner Ashish Jindal, because we are friends more than 20 years now, 2 decades. We almost worked about 10 years in between in many similar projects, and we kind of got somewhere in the middle that whatever we'll do together. What happened, Krita, at some point in career when you're about, I think for men, the 30s decade is one of the toughest decade because till 20s you are quite carefree. You just have a bag. I believe, I remember I landed in Gurgaon with my first job with half bags book and half bags, maybe a cloth, right? So that started my journey. And for me to go and move in for any experience, whoever has a better training, better opportunity, we don't have to think anything. Everything is rock solid back in that sense. But when you move to 30s, you are married now. You have responsibility towards family. Your parents are growing a little older. You have kids, they need time. And your job needs the most of the time for sustainability. Yeah. That is one time which is, you have so much of in mind to explore, but you're just getting confined. You're not being able to. And in life, what is important? I think time. But if you don't do things right in the right time, sometimes, if not always, sometimes you may fear of missing it. Missing the train. So I can't be thankful to God that He Almighty gave me that believe in myself. Take those decisions which has risks involved, and just blindly faith it and move towards that. So as I was saying, those times are not, the 30 decades were never easy. It was never easy for me, will not never be easy for anybody. But I think that was the right time when you have good experience of 10, 12 years or more than that, understanding the niche. I'll never recommend anybody just go and always start from the beginning. It's important sometimes that you have a little bit of knowing what you're planning to do. And then I had some, as I said, Ashish and, a lot of motivations. So, and that's led me to start our own. Okay. So there must have been some initial gap in the industry that you have, noticed. That's why you started to, launch your own venture. So, what was the gap that you think that something was missing from the industry that we wanted to fill up? There are two aspects of. So, Shruti, one is noticing what the gap is. One is creating the demand for it. Because, I remember I'd seen a movie in the Street of Wall Street, I believe, it was being said like, hey, can you help me sell this pen? And what he does is like, he takes away and asks to write the name on a paper and, I need a pen.
So you know what? You need to create the demand. So obviously, in our industry, especially the accounting firms in the United States, I tell you, there are. By the way, see, America is a country of freedom where people mostly do a lot of work of their own self, as they're on their skills, as they are self, I would say, employed a lot, and there is a lot of opportunity. What is the kind of a difference between, I think, not as much as what India and, at those times, I would say, in India, if a young guy comes and says, yeah, I have an idea. So you will see people, there was a kind of tendency, hey, roll your sleeves, go to the floor, spend 10 years experience, come back, and then dare to say what idea you have. Yeah. But today the world has changed, right? Today we can't, because the time is so important. If you have an idea, if you can implement that, doesn't matter that you have to spend that 10 years. Because the way you have grown up, the way the studies, the access to the knowledge base, there, so many different things. The idea is very important, and most important than idea is the implementation of the idea. Yeah. Now, coming back to your question about what is like, what we noticed. So I think the biggest room in this world is room for improvement. So there is always a scope. There's always a scope. And for, as I was just saying, America, country of freedom, like people, so many opportunities, they were able to grow the accounting practice. But while they are growing, there was a significant, gap between who is going to manage that. Yeah. So it's a saying that you can be a king or queen of a place, but to sustain there as a king or a queen is another thing. So in order to sustain that growth for those firms, you have to have many departments. You have your HR, you have extra office space, you have a trainability, you have to ensure to retain the people, you have a marketing department, you have to ensure an operations department, you have a CRM, you have a technology. So there was a huge gap, like who is going to heavy lift the back end, of all of this. While I was working with the firm from the front end side, I always saw that there is a huge demand. And I give you one example. There are like, I think, 400,000 accountants in the US. And more than that, maybe, there are certain surveys by 2026. It said like America is simply falling short of CPAs because young fellas are not taking finance as a major. So US is now looking forward to America, India, for filling in up the CPAs. So we have exams from India right now that you can pass a CPA from India, and so many opportunities are coming. So you see, when all of this are coming there, so many startups, so many business, so there are compliances, and somebody has to run. Then somebody can run as a principal of the firm, but there has to be a fulfillment of a back office. So that's what we were trying to assemble a solution, which is plug and play. So if you have a practice today, if you have a client, you know what you're doing, you're best in what you're doing. All you have to do is go and get your clients and have a back office, something like Cloud IT, who's going to take care of the fulfillment of the deliverables of your client, the fulfillment of your operations, and taking away the tensions, right? So we are partnering as a back office with the most of the firms there, or just not only firms. We work with different corporates, private equities, where their accounting functions we take a lot of remotely being handled through our back office staffing solution. What was the vision for cloud IT from the outset, and over the years, how has it evolved? I think in this world it's more important we talk about a long-term goals. In the real world, the honest about real world is nothing real. It's always the short-term things. When we started Cloud IT, I think our first goal was to get the first client. I remember the first client that we signed up, and oh my God, we were jumping off. Hey, we have, I don't know, like what we did. Today we have 1,800 plus clients. So there's a journey. So for me, it was an equal, amazing day when we signed the first client. Yeah. So technically, if you ask me, what about a business? It's like, doing a shaving.
No matter how good you do today, you have to do it tomorrow again, continuously. So we kept on doing something with this one vision. Let's do it a little better than yesterday. You can, you can do a lot of things in best way, but whether it's required in the market, that's the most important thing. So it's important that we understand the market need. We understand what is the need of the hour. We understand our capabilities. Then there is a commercially sustainable thing, like who are your clients? What is the right pricing? How you can give the best within that pricing. So, the key factors. So that's what is most important. So technically talking about a vision was doing something better than yesterday. Today, if you ask me what the vision, I think, I would like to close my eyes and think Cloud IT as a top leading, top consultant in financial, accounting excellence and financial world. Because in the coming times, consulting is going to be the most important, because a lot of thing AI will take care of the heavy lifting. So Cloud IT, the kind of the team we are developing right now, uh, that's the vision. I want to be, see Cloud IT as whatever big five, after the four or whatever. So that's as an top, globally, the back office solution services and consultant in that area. Okay. So you mentioned being a first generation entrepreneur. So being a first time entrepreneur or founder, there must have been some unexpected challenges that you guys had to deal with. So, what were some of those early surprises and how did you manage to navigate? The first time entrepreneurship is all you need is yourself and Almighty. Because that point in time, the biggest challenge for first time entrepreneurs, see, there's not very difference between serial entrepreneurs and who is the first time. But the few instances, that process is the same, because both of them are operating under key resources, maybe funding, cash flows, staffing, talent. Everything is not abundant, right? So there is some limitations and you have to operate in between. But very nice question you asked me about for aspiring people who want to be entrepreneurship. The first thing I think is the strongest point is believing in yourself. Because when you believe in yourself, and only when you know to believe, the world will believe in you. And when I said believing in yourself, it's not an easy process. It sounds easy said than done, because it's only you who know your limitations most Yeah. than your strengths. So getting up in the morning and knowing all the weaknesses that you have uh, in several areas, and then still kind of convincing yourself, you know what, I'm nevertheless, I'll rock it. I'll sustain. I'll survive. I'll fight. I'll come. So that belief is A. B is building your core team. I think first, because the difference between the first time entrepreneurship and serial, you will see when they go expanding, the core team goes along with that. Like they're doing X, Y, Z, whatever they're adding on, we are doing also. But so what will happen is the core team will move along with that. Yeah. So building that core team is, I would say, of course, there is a leadership, there is a belief, there is a vision, whatever, but there is being lucky also. Like, Yeah. do you have those people who is ready to believe you when you have nothing to show them to believe? There are two kind of peoples, okay, Shruta, I believe. One is who believes to see, one who see to believe, right? So the first time or any entrepreneurship, I think they need to have one thing, that the belief to see. Team building, taking things, everything is 10 times difficult. When you're starting first, you don't have an office, you don't have a right place to sit down, you don't have a right place to have your clients come and see you. I remember I was opening the door for the first client. In fact, one of my clients said, Sam, are you the only one and you're entering the company? Like you're talking on the business, when the operations come. I said, you know what?
Actually, yes, but don't you think you should be happy because you have the best. So I remember from there, believe in the time. You know, time is like amazing. With the right time, the right opportunity comes. And to all first time, that people works hard till they get the opportunity. The moment they get it, do they work hard enough? I think that would. Okay, so like you mentioned that in handling the challenges that came with starting this venture, you had a lot of support from your family and the key members of this firm. So can you reflect on those, like who? As I said, like one thing which is so important, like believing in yourself. Yeah. I think one who really helps you to learn to believe in yourself is your parents, right? Because they, and especially undisputed, the mother, no matter how good or bad you are, but she'll have a belief, the parents, that. So, obviously, the entire, wherever you are, anybody in life, it's just not because of one person. There has been many, many people through the journey. It starts with anybody is their parents, their teachers. I think, as I said, my accounting, I had some wonderful teachers, mentors. I worked with, a lot of I've learned from Mr. Basim, who's been my mentor, like my previous organizations. My coming to Gurgaon, a lot of it has a different story altogether. Was like, that was coming after, you know, mm, you, you find your soulmate in the sense, like the marriage where it concludes. So my wife has been my, like friend in college mate. Like we had studied together. A great, she has been amazing to help me, like parents taking care of being a kid, raising a kid. I think she helped me getting the man out of it, of me, like take those challenges. And particularly we are of the same profession. uh, she joined Cloud IT. Her name's Sachi Mazum. You'll see, it's a part of the COO, FPNA. So she has some tremendous experiences, more than 2 decades, for fractional CFO services. She has taken this division at Cloud IT leaps and bounds in terms of taking it there. And I'm sure she has a lot of complaints with me, maybe, but she has been a lot of, because it's never been easy when you are, kind of breaking a journey of being an employee and starting it from scratch, and, a lot of stuff. So she's taking care of the family, the kids. So, of course, that's there. I mentioned like one of my biggest motivation has been Ashish and you, as a friends where we evolved, uh, seeing a dream together. So as I see, life came into so many different aspects. Then talking about, I'm so lucky to have people believe in me, my US counterparts, my partners, uh, they are like the amazing guidelines is, but guardians rather. So they are the board of advisories at Cloud IT US. So Cloud IT Automation is a US entity, and Cloud IT Back Office Services is a subsidiary of Cloud IT US entity. So where we kind of providing a global, and we are trying to expand our, staffing solution beyond India also at some point in time. Anyways, coming back to the topic. So at the board of partners, we have, Mr. Daniel Gorin, uh, Martin Eisenstein, Steve Lott, different areas. So Martin is into merger and acquisition. Daniel is in operation taxations. Steve is from marketing side. BD, Chris Wallen is for the tax. So put together, Martin has 50 years of experience. He's um, into this profession. Daniel has about almost 25 years experience. Um, Chris has another 40. So if we add mine 20, it's a company seems like 150 years experience. So that brings an amazing strength. And the most, I always say my, our people are brands, and service industry is all about people. You will see in everybody a Sam and everybody in me. And, it's, we all have something common in all of us. Yeah. I'm so lucky to have some amazing team
who kind of believed in joining and helping us reach here, who all are working there, all equals. We believe in that working culture. And you talked about family. My family is now all of them. So, I'm glad you asked me. So I would say I started a family which was like just started there. And that that's what I see as in a family today. So today my family is Cloud IT family. And I'm so happy and so glad. Okay. Okay. So Cloud IT offers a variety of specialized services. So can you give us a quick overview of what are those services and what kind of, clients or industry that you basically serve? Right. So we bring a multi-speciality. Okay. So in accounting, just like in medical, we have different aspects. So we have FNA, finance and accounting, so which takes care of accounting, bookkeeping, write-ups, general ledger accounting, reconciliations, complicated, different reconciliar kind of stuff that we do. Then we have uh, tax division. So we are into tax preparations, tax reviews, tax filings for all US compliances. So all our staffs are typically completely trained at 100% trained with adherence to the regularity compliances in the US. Then we have FP&A, which is also called fractional CFO services. That's one side. Then we have due diligence, audit services, audit preparations, and then we have merger and acquisitions. Yeah, so put together, if you see, it's a quite a big spectrum of services that we have in a cloud IT, trying to build one-stop solution as a back office for all accounting division. And just it includes also internal controls and many other stuff put together with automation and staffing. Let's talk about COVID. So it was challenging for many on both the personal and professional front. So how did the pandemic impact you and the company? Was it, positive or negative? Oh, it was actually a teaching to the world was get back to your basics. I think that was the first thing that was there. The initial phase was again jumping into the unknown. The first thing came into mind was about sustainability, service, continuation and all those stuff. A lot of business were just looking maybe layoff and all those stuff. Thankfully, we did not had to go into that side. Our clients were amazing. And you know what, we were already on the cloud because our services were cloud based. So the importance, the staging of our services went automatically without noticing that the importance is so important. Like now, businesses realized that we can't run our company based on paper checks. We can't run things on the old school way. So this is the time we have to kind of think out of the box, get out of our old school and kind of embrace the technology, taking the fear out and seeing the benefits out of it. So that was one side of it. At Cloud IT, I think the biggest benefit we came across was we kind of invested fortune money in building a rock solid infrastructure in the cloud, in being able for us to go and hire people pan India and building a hybrid, work environment. And that helped to kind of knock those the tier two cities where we have so much of talent. I have no idea. There were just so that Cloud IT has become a kind of a woman empowerment. So I didn't realize when we start, we have a diversity in many sense. So we work. Our youngest employee, I think, is 21. Our oldest employee is 73. Okay, and we have both genders, and I think about 72% is women workforce. And why it helped? Because we have a working culture which allowed them to work flexibly from their home, being able to take care of their families, kids, and stay upmarket professionally with the talents and the knowledge they have. Uh, the women's ladies, they don't need a supervision. What they really proved during, I think, women empowerment in many areas came to a major extent during the COVID times. Yes. They outshined this pandemic and the challenges. So we were
being able to hire the best of talent without actually having them to change their homes, change the cities and come and all those stuff. So that was a huge benefit, because today one of the scarce resource is manpower. I think that's what we are fulfilling it by staying global. Are there any misconceptions about automation in accounting that you come, across frequently? It is, you know, do I have an answer? I don't think so. But okay, let me give you an instance. There has been a debatable issue. What was first on earth, whether the hen or the egg, right? And no answer, right? And suddenly automation comes, neither of them and I was there. That is also not right. So, you know what? It's the misconception, I tell you. You remember the unitary methods when you studied? Say, for example, if 5 people can plow a 15 acre of land in 30 days, how many days will it take to do 40 acres with 10 people? And it was like a 1 unit method. Now, the misconception, let me explain it to you. Now, the question is not dropping how many lesser men can do. It's about a volume. If they can do 15 acres in 30 days, like suppose 10 people, manpower is is never going to be at some point in time skilled manpower. So the automation should be looked into that, okay, with 20 people and not 15 acres, 100 acre, but not in 30 days, in 5 days. Yeah. So you see, so automation should be looked in here. The misconception is it taking our jobs? It's replacing human being? It's absolutely not. Do you want to fly a plane without a pilot? You don't want, because autopilot, even if it is there, the CEO of Airbus says, all you need to fly our planes when they automated the aviation, majorly the Airbus, like all you need is a pilot at the dock. So pilot to see, everything is working fine, and the dog is to see the pilot is not touching anything. But still, nobody wants to fly that. So technically, if you say the misconception is not about, should I embrace it? And if am I losing on it? No. The world should look at how it is helping in managing the volumes. Because please understand, all of this is coming because there's a lot of opportunity coming along with tons of opportunity. So because the resources are not going to, can't sit down and reproduce so many, humans suddenly. You need something to act artificially as much close to as a human being. So that's what I see as, the automation should come into help. What trends do you think will shape the future of accounting? And how is Cloud IT preparing to lead those changes? The patience, I think the business is lacking behind of waiting time in accountancy deliverables. So businesses are looking for accounting numbers right real time. So it was fine before, where businesses used to say, hey, what are my books on numbers saying last year, last quarter, or something like compliance. It's now more towards what my book's going to look for the next quarter, forecasting, being ahead of the curve. So all of this, you need a lot of technology. Until the previous generation, accounting was limited to the accounting software, where the accounting means P&L and balance sheet, and a financial statement broadly, if you say. Nowadays, the sources has gone beyond that. So you have a head count, different module where your the payroll is running. You have a point of sales. You have a lot of R&D. There e-commerce. So much of data points where a lot of AI has to do data mining, put together all of this, and then bring you numbers for decision making. So I'm not talking about accounting as say per se, but we want to change. When you said what is the trend, the trend is just not financial statements, because it has been a post-mortem after the fact. It is like ahead of the curve now. So you have to get different data points put together, and then get the right human brains, bring the right consultation and conclusion of what is coming as a meaningful insight for business. So that is, I think, the biggest challenge that
within the shortest span of time with the maximum data points, data areas, how you bring things to put to use environment. Yeah. What unique challenges do you come across in US market? How it is different? Because you mentioned you worked with IBM, so you worked in India also, so you know how the market operates. So what unique challenges does the US market face? See, the current definitely. So, question is what is unique? I think one thing is unique. They're kind of best on nothing is what they expect. So that's the biggest challenge, but that's the biggest benefit because you just can't sell crap in the US. So they don't take it like that, right? So that makes us work really hard to be good enough for them, what they expect. And second is the huge opportunity. And we have to ensure that we are fulfilling to the expectations. Okay. With everything going digital, data security is critical. So, how does cloud IT ensure that client data remains, protected? Of course, we are in one of those industries which is so much of, I would say, confidentiality, and all those stuff. Because I know, because I'm a taxpayer in the US, so it is absolutely important in adherence to US. And because we are a US entity, we have to really take care of it. So there, although I'm not a technical person, there is a list that we do. I would like to, just take a pick on that if that you allow it. So all our infrastructure data centers are residing exclusively in the United States. All those, the top level where you talk about everybody's, say, for example, Amazon servers or whatever the best, and we do that. We have rock solid data and bank level security, where we call it as next gen firewalls, antivirus solutions deployed. There is a lot of things which is mentioned in the website, but I'm just kind of giving a very high level. We have a data encryption at the transit and use strong encryption algorithms, which cannot be, decoded in that sense. Then we have access control, which is, as I'd seen, like true sense cloud computing, and which includes all risk mitigations and vulnerabilities. And to stay up to market, we always have the security policy procedures. We have a complete data backup recovery. We have regular security audits, so HIPAA compliance, and a lot of certificates that we have in the our website of different institutions that they give us those certifications that we are kind of a secured play, where and we use a lot of redacted formats. So you see wherever the data is, it's right there. So that's nobody can touch it. Uh, they can only view it to work. That's all that we have. Plus, taking care of the employee. One thing is very important. I really appreciate this thought that we had was we hire every people as if like you bring somebody when you look to bring somebody into your family. So we do all those due diligences followed by industry practice, what we call employee background checks, that takes about the education transcripts and all of their previous employment, all. Then we have at the end of the day, doing everything, we guarantee our clients by having our US based professionally insurances, which is I think $30 million of something like that we have the top Xcox and all those different companies, they insure us for that. So putting together, one is like what is the best practice that we are following, because we are in one industry which is completely based on trust, based on reliability, based on, you don't see people change their accountants and doctors, because that is one of very mutual, professional lawyers, in that sense. So we know that fact, and we keep no stone unturned. What personal habits or routines have been key to your success as a founder? I was never in discipline. Okay. Let me tell you, because, creative, if you're creative, you can't be in a discipline, one discipline. So, there has been a fact before being founder and after being, I think, I've been more responsible now. Okay. So, I have dreamt where nothing was there.
I believed in, as I said, the belief was there, the belief in team making, the working really slog for it, cheese for it. Yeah. In terms of habits, I'm a very musical guy. I love to listening to music. I feel we have very light environment with employees. We have singing, we have dancing, those. So s- good music keeps me calm because I belong to a family. Also, my father has been a music instructor, so I have lived that musical environment. Plus, up recently, I try to take care of some healthy habit. Don't go off for diets which is not really good. So, and then take some walks or on those stuff, because there is this thing, Shweta, I've heard it, that if you're heading something, like you're a king and a queen there, a king can't be stressed, a queen can't be stressed, right? So no matter whatever the situation is, suddenly, because every day is not the same, we really get up in the morning and is something immediately to attention and take care of. Yeah. I can't get stressed. For that, there are some habits which is important. Eating habits, sleeping, I still struggling, okay, because I have a time zone which is all around the place. So I don't know how am I managing that. But there are other aspects, trying to keep those as much as I can. And yes, spending my time with where I really enjoy, kids, families, with everybody, and I always believe in do work sincerely, but don't do it. Like, there is a difference between pressure and tension. Yeah. I love pressure because with the right amount of pressure, the right diamond comes out. But I avoid tension. And that's a working culture I want to really build among the team. Don't work in tension. Yeah. Take a pressure. So that also. Okay. She's and other key members were, like kind of like the foundational stones to building this place up. So I think that this podcast won't be complete. Nothing can get complete without Ashish. And I tell you about Ashish. I want to tell all your viewers. He such a sought after person. Like my entire company, at Cloud IT, they all flock it around with Ashish, if not with me. And wherever I am, because we are on a friend, as I said, like I've learned a lot of things from him, in different aspects of life, how to look things in different directions. So I a lot of the times say he's like my ATC controller, like you're flying, is guiding, go into this altitude or come down or do like this. Of course, he's a little shy guy, I tell you. Okay, he is not one that would like to come in front and talk. But if you ask him, I owe you one if he comes. Okay, sure, So but you have to keep things a little light, not like so professional podcast, because कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा, something Yeah, like so a lot of our viewers are actually, lot of our viewership is from India. So they would love to hear something in Hindi. like mehfil, something candid chat. Of course, yeah, we had it for a US one. Let's have it for Indian viewers. We love everybody who loves to hear in Hindi. Let's see if we can have Ashish. So, कैसे हो? अच्छा. ओके, सो जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले, सैम सर ने मुझे बताया कि आप दोनों ने मतलब जब ये वेंचर शुरू किया तो आप दोनों थे इनिशियल फेज में, आप दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया. सो दोनों मतलब पहले से एक दूसरे को जानते थे, सेम फील्ड में काम करते थे, या फिर कॉलेज के रैंक, मतलब आप दोनों कैसे कनेक्ट हुए? बिकॉज स्टार्टिंग अ वेंचर टुगेदर इज अ बिग थिंग, एंड ये यूजुअली लोग उनके साथ नहीं करते जिनसे वो रिसेंटली कनेक्ट. करेक्ट. तो हम दोनों एक कंपनी में मिले थे साथ में. हमने काम किया वहाँ पे, और करीबन हम लोग 10 साल तक साथ में हम लोगों ने काम किया. और उस वक्त काम करते करते हम लोगों ने इस इंडस्ट्री से, हमें दोनों को ही प्यार था. अकाउंटिंग से प्यार था, टेक्नोलॉजी से प्यार था. दोनों के टेस्ट सेम थे. दोनों को एक ही चीज़ का जुनून था कि कुछ लाइफ के अंदर बड़ा करना है. और करते 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 हमें ऐसा लगा करने के लिए कि अब जॉब में वो जो हम करना चाह रहे हैं वो हमें
फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे करने के लिए। कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पे साथ में बैठकर जो सोच रहे हैं, जो सैम की विजन थी वो हमेशा बड़ी थी, उसको उसको हमेशा बड़ा देखने का शौक है करने के लिए कि चलो एक 2,000 लोगों की कंपनी बनाते हैं, 5,000 लोगों की कंपनी बनाते हैं। शुरू से उसका, आज से नहीं, जब से साथ में काम करे तब से था। और मुझे शुरू से बैक एंड संभालने का, ऑपरेशन देखने का, टीम हैंडलिंग का, टैलेंट को रोकने का, टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज देने का, उसका इंटरेस्ट रहता था करने के लिए। तो हम दोनों ने फिर काफ़ी 1 साल तक सोचा कि कैसे करें, क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। फिर करते 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 अचानक एक दिन बस अब माइंड बना के अब करते ही हैं करने के लिए, यही राइट एज है, यही राइट टाइम है, कर लेना चाहिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरी इंटरव्यू जिस कंपनी में मैं कह रहा था, वो आशीष ने लिया था मेरा इंटरव्यू, ओके, अलोंग विथ द सीईओ मिस्टर बसीम। तो इट वाज बैक इन, आई बिलीव, 2006 or 7, आई बिलीव सो, ऐसे। एंड वी वर वेरी यंग दैट टाइम। मुझे लगा कि व्हाई सच अ यंग गाय, वाज ऑलमोस्ट माय, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू लुक वेरी यंगर देन मी। तो एंड ही वाज द राइट हैंड ऑफ सीईओ, बिकॉज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यू नो बीइंग टेकिंग केयर ऑफ द बैक एंड, जो आप कह रहे थे हिंदी में बात करो, ठीक है। आशीष, इज आल्सो नोन एंड्रयू जिंदल, बिकॉज़ एक वो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे यूएस काउंटर पार्ट्स को सैम एंड एंड्रयू से एड्रेस करने में, साउर एलियास। तो ये जब नंबर्स है ना, व्हेन इट कम्स टू से जैसे हम बहुत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वो तो ऐसे बहुत समय है, मुझे नहीं पता इसकी इम्प्लीमेशन, इम्पैक्ट क्या है, हाउ मच फाइनेंस इम्पैक्ट है इसमें, इसमें ड्यू डिलिजेंस क्या है, कुछ नहीं। तो हमेशा आपको एक साथी चाहिए जिसका वो डोमेन एक्सपर्ट है, कि आप ना ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो बता देगा आपको, ये नहीं कि मत करना यहाँ पे, लाइक। तो वो हमेशा वो एक दूसरे पे हम बिलीव किए हैं इसके सन में। जे जाना तो छोड़ दो, मुझे आता ही है तो जाके भी क्या करूँ, ठीक है। तो फिर ये हमेशा हेल्प हुआ है। एंड बहुत शायद कम उम्र से इतना वो नंबर ज्यादा फ्रंट में आके नहीं बोलेगा वो, आप बैक दी कैमरा बात करो, फिर आपको पता चला गया था, आप खुद नहीं बता रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आशीष से शेयर करने के लिए। सो वो चीज जबरदस्त है, आई थिंक, जो हमारे कंपैटिबिलिटी में एक, और एज तकरीबन हम 7 दिन आगे पीछे है, ही इज 22nd, आई एम 18 जून, बहुत बड़ा हूँ 4 दिन। पर इसमें ये जरूर है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें, लाइफ के एस्पेक्ट्स एक साथ आते गए, चाहे वो आप मैरिज ले ले, के जॉब प्रेशर्स, पेरेंट्स गेटिंग, लाइक नीडिंग योर टाइम, तो बहुत सारी चीजें रिलेट होना शुरू हो जाती, इट्स लाइक अ ग्रेट कंपेनियनशिप, कि आज मैं सुबह जो प्रॉब्लम लेके आया हूँ, शायद उसका भी वही प्रॉब्लम है, उसको बात करते। तो मैं फिर कहूंगा कि जर्नी बहुत, डेस्टिनेशन का तो कोई श्वेता अंत है ही नहीं। whenever you peak of a mountain, आप दूसरे बॉटम पीक के बॉटम में हो, तो उसका तो हमें भी नहीं पता, सोचा भी नहीं, लेकिन हम जर्नी को एंजॉय करते हैं ना। आई एम बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, और मेरी पूरी टीम, आई एम श्योर उसमें कोई दो राह नहीं है कि आशीष का मेंटरशिप जो है, इट्स बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, लाइक, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। सो इनिशियल टाइम पे स्टार्ट आप दोनों ने किया, हो सकता है कुछ और आपने हायरिंग की हो कि उस टाइप का दो के हो, बट इनिशियल स्टार्टअप यही होता है, 4-5 लोग होते हैं, वो एक विजन पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टीम किसी भी कंपनी के लिए, चाहे स्टार्टअप हो या फिर एस्टैब्लिश्ड कोई कंपनी हो जो 50 साल से काम कर रही हो सेम फील्ड में, टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक बोलते हैं कि यू आर ओनली एज गुड, अ कंपनी इज ओनली एज गुड एज इट्स टीम। सो आप दोनों ने स्टार्टिंग से देखा है अपना पूरा टीम टीम जो आपका आज 200 प्लस के अप्रॉक्स आपकी टीम है, आप लोगों ने बिल्ड किया है। सो हाउ वाज द प्रोसेस? एक ही सोच थी कि पहले सबसे पहले सोची थी अच्छा टैलेंट हायर करना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, टैलेंट अच्छा आना है। फिर उनको ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो रुके, वो मेहनत करे, उनको चैलेंजेस मिले, क्योंकि टैलेंट की एक अजीब चीज होती है,
टैलेंट को रोकना भी उतना मुश्किल है जितना हायर करना है। क्यों? उनको रोज चैलेंजेस चाहिए, उनको एक वो एक ग्रोथ का एनवायरनमेंट चाहिए, उसको उनको वो कंपनी चाहिए जहाँ पे वो कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो। क्योंकि टैलेंट लोग एक अजीब प्रॉब्लम भी वही क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब तक टैलेंटेड लोग लिया होंगे रोज एक नई प्रॉब्लम होगी, नया कुछ होगा करने के लिए। तो आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जहाँ पे उन लोगों को अपनी स्किल सेट दिखाने का मौका मिले। उनको लगे कि अ, हमें थोड़ी-सी ओनरशिप है हमारे पास आज की डेट में अपना हम कुछ करना चाहते हैं, हम कर पाएँ। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उनके पास। तो हम बस इसी प्रोसेस से स्टार्ट किया था हमने करने के लिए, और कोशिश की कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जो थोड़ा-सा फैमिली रिलेटेड एनवायरनमेंट हो, जो आके उनको कभी ये ना लगे हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। उनको ऐसा लगे हम अपने लिए कर रहे हैं, या आप ही की कंपनी है, या हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों को करने के लिए, बट आपके क्लाइंट्स हैं, आपकी कंपनी है, आपकी टीम है। वो प्रोसेस करते कब 200 प्लस हुए हमें नहीं पता चला। हमने 200 प्लस करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं बनाया था। हमने तो प्रोसेस जो पहले दिन बनाया था वही आज तक प्रोसेस चल रहा है करने के लिए। वो 200 प्लस हो गया, कब 2000 प्लस हो जाएंगे ये नहीं पता, बट प्रोसेस हम नहीं की रखा करने। जैसे मैं अभी ऑफिस में जब मैंने एंटर किया, एक चीज जो बहुत मतलब क्लियरली मुझे दिखी वो ही है यहाँ पे कि विमेन एम्पावरमेंट। मुझे मोस्ट ऑफ द स्टाफ देयर फीमेल, एंड ये बहुत अच्छी चीज लगी बीइंग अ वुमन माई सेल्फ। ये बहुत ही अच्छी चीज लगी, और जैसा सैम ने बताया भी ऑलमोस्ट 72% आपका जो टोटल एम्प्लॉय काउंट है, 72% ऑफ देम आर फीमेल। तो how did you manage to do so? Because in India there is a mindset of people कि women are you करियर सेंट्रिक हो तभी तक है जब तक वो अनमैरिड, उनकी शादी हो गई, नाउ दे विल फोकस मोर ऑन फैमिली, एंड कंपनीज इक्वली विल पे फ्रॉम हायरिंग women employees. So अब ये हम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अजीब बात, हमने लास्ट कोविड कोविड के टाइम के बाद से मेजर जो हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हमें हमेशा ऐसा लगा, क्योंकि हमने ऐसे सुना और हमने देखा कि उनसे ज़्यादा बेटर कोई मैनेज नहीं कर सकता मल्टीटास्क के। क्योंकि वो ये कहते हैं ना, घर से सीख कर आते हैं करने के लिए मल्टीटास्किंग करना। तो हमने ऑफिस में भी वही चीज़ देखी उनका काम करके। काफ़ी अच्छा टैलेंट हम लोगों के पास है आज की डेट में, और अगर आज हमारी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो उसमें सारी फीमेल्स आपको दिखाई देंगी कंट्रोलर्स में। और जितना डीप में जाके, जितना डिटेल में जाके, अच्छी एक्चुअली अकाउंटिंग के अंदर डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जितना फीमेल्स डिटेलिंग में जाती हैं उतना नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं करने के लिए। तो हमने फीमेल्स का काम करके देखा, जो टीम में देखा कि सब डिटेलिंग में अच्छे जाके उन्होंने अपने क्लाइंट को इतने अच्छे से किया, और उन्होंने बहुत डेडिकेट होके क्लाइंट्स को डिलीवरी दी, क्लाइंट से अप्रिशिएट किया, और एक प्रोसेस बन गया। क्या एक को देख, अच्छा कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम भी ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। फिर आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल, सब चीज़ वर्क करी, सारी चीज़ करी। मुझे याद है मेरे कुछ हमारे क्लाइंट जो थे, आई मीन पार्टनर्स जब आते हैं, ये वॉल ऑफ फेम आप देखेंगे तो कभी कभी ओ माय गॉड, तो मैंने यार लाइक मैं इस पे एक बात सिर्फ करना चाहूँगा। आपने कुछ मैरिज एंड आफ्टर मैरिज की बात बताई, तो देयर इज द जोक, एवरी हस्बैंड वांट्स हिज वाइफ टू बी द सीईओ बट वर्किंग फ्रॉम होम। आई थिंक वो ज्यादा काम कर गया, बिकॉज घर पे रह के दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ the other necessity, thing of their own, plus जो उनकी काबिलियत है, जो वो खुद इतने मेहनत करके ये जो 200 प्लस है, तो जो numbers में all are चार्ट accountants, so that's a big thing, और everybody is professional, या तो वो MBA फाइनेंस है, ये CAs हैं। और एक अदर एस्पेक्ट है, मुझे लगता है वुमेन्स मेक्स क्लाउड आईटी लुक ब्यूटीफुल, वो एस्पेक्ट भी है। एंड आपने सिक्योरिटी के बारे में पूछा था, ट्रस्ट। एक बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर दैट कम्स व्हेन यू वर्क विद अ लेडी, बिकॉज़ दे डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। एक नॉर्मल चीज है, आई एम बीइंग अ मैन, आई डोंट वांट टू बी बायस्ड टू सेइंग दैट। एक पीस ऑफ माइंड रहता है ना क्लाइंट्स को, ये कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिटेल्स, यस दे विल प्रिजर्व इट, दे नो हाउ टू प्रिजर्व थिंग्स। The accounting industry that you are operating in has seen a lot of change with the rise of automation. So आपके perspective से
ऐसे कौन से मेजर शिफ्ट्स हुए हैं जो जब से की कंपनी ऑपरेशनल है या फिर जब से आपने काम करना स्टार्ट किया तब में और आज में क्या difference? जब से पोस्ट कोविड एआई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो पहले जो काम करने में या डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता था, कोई चीज़ होती थी, आज की डेट में आवर्स में वो काम हो जाता है करने के लिए। और जिस हिसाब से अकाउंटिंग चेंज हो रही है, जो भी टास्क ऑटोमेट हो सकता है करने के लिए, रूल बेस्ड अकाउंटिंग आ गई है आज के पे। जितना रूल बेस्ड हो सकता है करने के से एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको डेटा एंट्री को क्लोज, डेटा एंट्री खत्म होती जा रही है। तो मार्केट में सबसे बड़ा शिफ्ट आ रहा है धीरे धीरे, वो कंसल्टिंग सर्विसेज साइड जा रही है। जो अकाउंटेंट पहले डेटा एंट्री पे फोकस करते, बुक्स कंप्लीट करने पे करते थे, आज के डेट में धीरे 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 एडवाइजरी सर्विसेज में जा रहे हैं। उनको आज की डेट में नंबर्स को खुद समझ कर अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना पड़ता है, करने की ज़रूरत है। ये नीड है आज की डेट में, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा आ गया आज की डेट में। आज की डेट में आपको इतना सारे टूल्स मिल गए हैं कंपेयर करने के, उस डेटा को समझने के, उसके बेस पे डिसीजन लेने के। सबसे बड़ा चेंज है, पहले रियल टाइम अकाउंटिंग नहीं होती थी। आज की डेट में जिस स्पीड से जा रही है, रियल टाइम अकाउंटिंग आ गई है, रियल टाइम डेटा अवेलेबल है आज की डेट में। नई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं आज की डेट में। आप सारे सॉफ्टवेयर से आपका पॉइंट ऑफ सेल, आपको बैंकिंग, आपको सब मोबाइल पे आज की डेट में आपको जो डेटा चाहिए आपको मिल जाएगा। बट उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको ऐसे कंसल्टेंट चाहिए जो आपको उस वैल्यू, उस डेटा की वैल्यू निकाल के आपको दे सके। ये सबसे बड़ा चेंज लास्ट 4-5 ईयर्स में है कि पहले सिर्फ बुक्स कंप्लीट करने में फोकस रहता था, सिर्फ पहले कंप्लायंस साइड पे टेक सिर्फ फाइल करने पे रहता था। अब उस डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? आज की डेट में उस डेटा के बिना ना आपको कंपनी में लोन मिलेगा, ना वैल्यूएशन होगी, ना आप रन कर पाओगे। आप बहुत जल्दी आप कैश नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको हर वक्त आपको आज के दिन में अपडेट रहने के लिए डेटा को प्रॉपर वे में देखने की ज़रूरत हो गई। What is your vision for Cloud IT in the next 5 years? Where do you see the company? What are your plans for expanding? See, अभी तक मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि मेरी आई एम रॉन्ग बट आपका जो अभी जो सर्विसेज का जो मॉडल है वो B2B है। ओके, सो आप मतलब कमिंग फ्यूचर में क्योंकि आपको पता है कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ें दूसरे बिजनेस को ऑफर कर रहे हो, तो आपको ऐसा है कि फ्यूचर में आप B2C मॉडल में भी शिफ्ट होना चाहो या एक्सपैंड करना चाहो या फिर जोग्राफिकली आपने अभी से बोला कि जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन। पता नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने आपको हमारा बिजनेस लाइन का लीक करा है इन्फॉर्मेशन। अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आई थिंक हम दोनों ही सेम होंगे। आई आस्क आशीष's व्यू पॉइंट। मैं एक चीज बताऊं, हमारा B2B और B2C में एक एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम एक होलसेल सर्विसेज में हैं। तो हमारे सारे सर्विसेज यूएस के जो बड़े अकाउंटिंग फर्म्स है, जो अकाउंटिंग, हम उनके साथ एज अ बैक ऑफिस कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। नाउ वी आर, हम वी आर प्लानिंग टू कि गो टू B2C। जो हमारे लिए B2C है वो एंड कंज्यूमर नहीं है, बट जो बिजनेसेस है। अभी क्या है, बिजनेसेस अकाउंटिंग फर्म में जाते हैं और हम उनके इस अकाउंटिंग फर्म को सर्व कर रहे हैं। हम 2025 में हम इसको नए प्रोडक्ट को ले आना चाह रहे हैं कि जो बिजनेसेस में, बड़े बिजनेसेस में, जैसे पी फर्म्स, प्राइवेट इक्विटीज एंड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट जिनको अकाउंटिंग फंक्शन इन हाउस रखनी है। क्या है उस इन हाउस में, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। आप प्लान करेंगे यूएस में लाएंगे कैसे, तो हम उनके लिए ग्लोबल स्टाफिंग एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड एक पैकेज एंड जो भी हम उसको कहें वो रेडी कर रहे हैं। और R&D टीम और ऑपरेशंस टीम, दे आर ऑलरेडी अकाउंटिंग अकाउंटिंग फंक्शन से रिलेटेड है, फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए फाइनेंस मैनेजमेंट भी रिलेटेड है। उस चीज पे हम ला रहे हैं जहाँ पे एंड B2B, नॉट जस्ट अकाउंटिंग फर्म्स, हम लाना चाहते हैं। और विजन में, मेरी विजन वही है कि ग्लोबल लेवल पे टॉप कंसल्टेंट्स हम बने। क्योंकि जो अभी आशीष बता रहे थे और मैं भी, कि आने वाले टाइम में जो भी डेटा है उसका क्या मीनिंग है, उसको यूज कैसे करना है, उस चीज को अगर कोई किंग होगा इस इन नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years, जो इसको सुप्रीमो रहेंगे वो बेस्ट कंसल्टेंट रहेंगे। एंड आई थिंक दैट्स द एरिया हम उधर
काम करना चाहें। Because I was wondering that आपकी सर्विसेज इतनी मतलब अच्छी है, टॉप नॉच है कि आप दूसरे अकाउंटिंग फर्म्स को ये सब एक्सप्लॉइट कर, तो आप सीधे वो मार्केट क्यों नहीं कैप्चर करते जो वो इवेंचुअली कवर। उसका एक रीज़न था कि हम अपने स्ट्रेंथ देखिए, एक क्या टाइम ज़ोन पे बात होती है कि अगर आप एंड क्लाइंट पे करेंगे ना, तो उस टाइम ज़ोन में रहना है जो कि बायोलॉजिकली अपोजिट हो जाती है इंग्लिश। तो वी वांटेड कि हम उस टाइम जोन में काम करें जो विन विन है, एडवांटेजेस है दोनों के लिए। लेकिन अब चूंकि हमारे यूएस में बहुत एम्प्लॉयज हो गए हैं और इंडिया में भी है, तो हम इस चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन आई वुड से, बिकॉज आई मस्ट अप्रिशिएट इस बात के कि आपसे बात हुई नहीं और आपने यहाँ तक पहुंच गए इस चीज को, ग्रेट। हमें तो कई साल लगे यहाँ पहुंचने में, आप तब मिनटों में पहुंची। सो दैट्स अमेजिंग ऑफ यू। हमारी विजन जो अब बात अभी लास्ट पे हम लोग कर रहे थे अभी, अब हम चाह ये रहे हैं, हम बड़ी एग्रेसिव ग्रोथ लेना चाह रहे हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में। ये मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट पे रोज नई सर्विसेज नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो मार्केट से जा रही है, नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। एआई काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है। तो इस मार्केट, इस एनवायरनमेंट को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो अब हमने लास्ट 1 ईयर में एफपीएनए सर्विसेज स्टार्ट की, टैक्स प्लानिंग सर्विसेज स्टार्ट की, मर्जर एंड एक्विजिशन स्टार्ट किया। अब B2C मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, B2C मार्केट को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर्स में आवर आइडिया इज एटलीस्ट 1000+ टीम हम बना सकें और इस कंपनी को ग्लोबली एटलीस्ट 3 to 4 कंट्रीज, 5 कंट्रीज हम लेके जा सके। आज की डेट में हम कितना है ये लो श्रोता, एक जैसे आपने कंसल्टिंग, आपने देखा होगा 2-3 बार हमने कंसल्टिंग बात करें। मैं थोड़ा सा आपकी व्यूअर्स के लिए मैं बताऊं, अकाउंटिंग में जैसे एफपीएनए एक डिवीजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ये मेजरली उस कंसल्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। और ये कंसल्टिंग तब स्टार्ट होती है जब फर्स्ट एंड डेटा रेडी है, एफएनए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का काम हो गया, अब उसकी एनालिसिस चल रही है उसकी। तो हम इस डिवीजन को एज वन ऑफ आवर सीईओ सची, जो मैंने आपको मेंशन करा कि अभी तक क्या होता है, व्हाट आई हैव लर्न, एफपीएनए इज नॉट माय डोमेन, मेरा ज्यादा डोमेन नहीं है, इनका है, सची का है। तो व्हाट आई हैव सीन देयर दैट बड़े बिजनेसेस ही अफोर्ड कर सकते थे कि एफपीएनए आप समझो एक हाई लेवल ऑफ एनालिसिस चाहिए, फुल टाइम चाहिए, और उस स्मॉल बिजनेसेस डिजर्व करते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। राइट। अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा एफपीएनए टीम है, जिनपैक्ट के पास होगा, गूगल के पास होगा, बट बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो डिजर्व करते हैं। तो हम एक ऐसे जो हमारा विजन है कि वो एक अफोर्डेबल, लाइक आप शेयर्ड पूल रिसोर्स के थ्रू, कि हमारा एक वेरी क्वालिफाइड और ट्रेन्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक निश स्पेशलिस्ट टीम रेडी है। आप आओ, आप चाहे 50 आवर्स की सर्विस लो मंथ की या 40, बट आपको अफोर्डेबल करके दे रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज। और यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो ये कहते हैं ना कहावत, एक बुद्धिमान दुश्मन से क्या कहते हैं, बेवकूफ दोस्त से अच्छा है, बिकॉज वो आपको सिखा के जाता है। राइट। तो एफपीएनए कैसे डिवाइन, यू कांट हैव अ फेक और रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज्ड इंफॉर्मेशन, और तो देयर यू कांट कॉम्प्रोमाइज। मे बी किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, बट इसीलिए ये हमारा विजन है कि हम इसको कैसे एसएमईज इंडस्ट्री को एफपीएनए डिवीजन की और उसी से ही उनकी फंडिंग, फंड रेजिंग्स, बहुत सारे चीजें वहां से ही स्टार्ट। सो आप दोनों की जो जर्नी रही बहुत इंटरेस्टिंग रही। जो भी मतलब मैंने इससे कम टाइम में जो लर्न किया बहुत इंटरेस्टिंग रही। और आप लोगों ने जो टीम बिल्ड की है वो भी बहुत अमेजिंग टीम है, जैसा कि मैं मिली कुछ लोगों से। एक चीज जो आप लोग अ, हम मतलब जो उन लोगों को एडवाइस करना चाहोगे जो अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इंडस्ट्री में, या तो वो किसी कंपनी में काम करना शुरू कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कुछ वेंचर प्लान कर रहे हैं, तो एक ऐसी चीज एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे। सबसे जो मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें है, जो आप कर रहे हो उसको समझ के करो। एक एक, चाहे बिल एंटर करो चाहे एक्सपेंस एंटर करो,
जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, पहले उस इंडस्ट्री को समझो, उसका काम समझो। जो नॉर्मली अकाउंटेंट जो मिस करते हैं सबसे पहले, वो कभी इंडस्ट्री नहीं समझते जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनको ये लगता है हमारा काम है सिर्फ जो डेटा है उसको इनपुट करना, बस ये नंबर्स है, हमें बता के इसे क्लोज करना है, पेनल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी, कैश फ्लो बनाना है, जो सॉफ्टवेयर निकाल के दे रहा है हमें देना है। नो, वो अकाउंटेंट का काम नहीं है। अकाउंटेंट का काम है सबसे पहले जिस इंडस्ट्री में काम करे उस इंडस्ट्री को समझो, वो इंडस्ट्री है क्या, हर डिपार्टमेंट को समझो, क्या रोल है हर डिपार्टमेंट का, उस बिजनेस को समझो। उसके बाद जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपकी अकाउंटिंग अलग होती है पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि कौन सी नेचर एक्सपेंस कहाँ जाना है, किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि रिकॉर्डिंग आप तभी अच्छी कर पाओगे जब आपको बिजनेस पता होगा, अदरवाइज आपको ही नहीं पता होगा कि आपने रिकॉर्ड ठीक से कहाँ क्या करना है। डेटा तो चला जाएगा बट वो वैल्यू नहीं बनाएगा, वो मीनिंगफुल नहीं होगा। डेटा मीनिंगफुल तब होगा जब आपको इंडस्ट्री समझ में आएगी, आपको बिजनेस समझ में आएगा। तो मेरी एडवाइस सबको सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले जो कर रहे हो उस इंडस्ट्री, उस चीज़ को समझ के करो करने के लिए, बस उसके बाद तब ठीक ही रहेगा। जो डेटा आएगा वो सब अच्छा ही आएगा, जो चीज़ आप काम कर रहे हो वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, खुद भी इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को करने के लिए, और बेटर रिजल्ट्स भी आएंगे उस चीज़ में। राइट, अंडरस्टैंडिंग सही है तुमने बताया। मैं किसके एक वर्ड है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक रफ एक्सप्लेनेशन, पता नहीं कैसे ऐसा वन वर्ड है जो मैं चाहूँ कि मैं सबको बोलेंगे बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। देखिए मैं हमेशा ना टीम को दो पार्ट में देखता हूँ, एक एक होता पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, एक है पार्ट ऑफ सोल्यूशन। आप अपने आप को देखिए पार्ट ऑफ सोल्यूशन में कैसे आप ले जा सकते, एंड इसका कोई वन स्टेप एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये लर्निंग फेज में आता है। सिंपल अगर मैं अपनी पुरानी नॉस्टैल्जिक देख लूँ, then मैं कहूँगा जी तोड़ मेहनत करो यार। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो कोशिश करो वो तुमसे बेहतर कोई ना कर रहा हो। अगर आप शुरू का जो, देखिए हमारे टाइम, अभी के जो नया जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत टाइम नहीं है। मुझे नहीं लगता रिटायरमेंट 60 तक होगा उनका, उन्हें पहले ही करना होगा, क्योंकि हमारा भी नहीं है शायद। ठीक है, हमारी 5 साल पहले ही सोचना पड़ेगा, और उनके लिए और भी। तो उनके पास आप देखोगे ना, अपॉर्चुनिटीज जितना ज्यादा है उसके साइड इफेक्ट्स ये है कि टाइम ज्यादा नहीं है। तो आप कम टाइम में भी देखिए ना, पेशेंस लूज नहीं कर सकते, शॉर्टकट भी नहीं है। तो चीजों का क्या, आप जीतो पहला वो जो 5-10 साल है, देखो कहाँ आप सीखने को मिल रहा है, अच्छे मेंटर्स के साथ आप सीखो, जीतो और मेहनत करो यार। एक चीज सिंपल द बेसिक्स, आप जो कर रहे हो आज, आप जो करना चाहते हो, इस दोनों का गैप में आपकी मेहनत पूरा करेगा। प्रॉब्लम क्या है पेशेंट में, कि आज जो आप कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो करना है जो आपको करना है, बट इसके बीच में एक जर्नी है। और जर्नी का मैं एस्पायरिंग को मैं यही बोलूंगा कि व्हाट यू आर डूइंग टुडे ना, उसको इतनी अच्छी के साथ करो, कि शिद्दत के साथ करो, कि वहां आपको पहुंचने से कोई रोके ही। आई थिंक दैट वुड बी माई वन थिंग, जो है उसको ठीक से इंडिस्पेंसिबल बन जाओ, सोल्यूशन का पार्ट।